if I compare with the Nifty and the current market. It has been lagging because of certain decisions that the upper management has taken. But let's deep dive and understand how the business is behaving. Anything I say on this channel is completely my opinion. Don't consider this as an investment advice. आपको किसी भी YouTube view से अपना investment decision लेना भी नहीं चाहिए until unless the person is certified. I'm not certified. I'm just sharing my homework that I'm doing before I invest in Burger King. Okay, it includes all the latest updates till today. What is happening with Burger King so far? Okay, right now in front of me on the side you can see that I'm comparing the website of Burger King with the Domino's. Okay, if you see on the Burger King side, it's been things like, okay, things are pretty free. Buy this, get this free, or put this code, get this free. And if you see that the price menu on the Burger King is somewhere around 50 रुपए से शुरू हो जाता है. Or if you compare with the Domino's is a little bit expensive. And if you see the kind of discounts the Domino's is giving, it is actually associated with other vendors too. So basically, that is actually called sharing your consumer base. So basically, Paytm अपने consumer base को Domino's के साथ share कर रहा है to give some discount. And in that context, जो discount होता है, that is actually is not just given by Domino's itself. It's actually shared between Paytm and Domino's. So it does not actually impact the complete the discount doesn't just impact the Domino's itself, though it is being shared. The discount is shared in that context. But if you see in the Burger King point of view, सारा जो discount है, it is currently owned by Burger King. So Burger King is actually trying to make people consumer to get attracted more. Basically अपना consumerism का तरीका है, अभी चीज़ें सस्ती दे दो, free में दे दो, people get used to, people get addicted, and then they start loving it. Very similar to which are done by other vendors. Like आजकल हम food order करते हैं from phone and online rather than going directly to the restaurant. So जो conventional restaurants हैं, they are not actually getting the same advantage until they don't come up with other platforms. So that's one thing, and I think that this kind of discount giving technique for a short term or for a duration when it is running, ये उस time तक company की operating profit margin को impact कर सकते हैं, because they are looking for a long term picture rather than a short term picture. Okay, so इस time तक I would say probably like the time when these are, until the consumerism is not fully done, it will impact the balance sheet of the Burger King. Okay, that's one thing said. Okay, but also comparing with the Domino's is just because that Domino's की 6 to 7 years history ये दिखा रही है कि as the time passes by, discounts will slowly evaporate, or it would be minimized or shared. Okay, so that's one thing to keep in mind. Okay, that's one thing I was trying to check. Okay, another thing, I don't know whether other people are doing it or not. I always go in trends to understand that how people are, young generation or the people who uses the internet a lot, how many times they actually search for these kind of companies. And here I am actually comparing Burger King and Domino's and KFC. If you guys don't know, Domino's is actually owned by Jubilant Foodwalk, and KFC is owned by Devyani, and Burger King is a Burger King listed. Okay, so if you see here in the listing here that basically search जो है वो 2018 में भी लेके 2021 में, it's all same. And I think again now Omicron variant has been hit up in India, so basically the search जो है वो कम हो चुकी है. And if you see the KFC, it went high. Sorry, Domino's, it made a peak around 100, far much searches in December 10 to December, probably January 3rd. It's just because that इस time पे Burger King जो है वो list हुआ था, so many people started searching about Burger King, that what is it all about. Okay, so basically the way I understand the search, I'm able to understand कि Burger King को उतनी value search नहीं करते लोग, उतना search नहीं करते as compared to Domino's or KFC. That's one thing in my mind. Okay, so adoption rate of Burger King as compared to KFC or Domino's उतना online penetrate नहीं कर रहा. This is just a trend. Don't consider it is equivalent to the selling of burgers or Domino's pizzas. It is just a perspective.
Okay, so that's one thing. Let's do a comparison of Burger King with the Nifty 50. जब शेयर खरीदने की बात आती है तो we really need to understand the profitability aspects and everything. Okay, it's not just about the trends, it is not about the consumerism, it is not just about, but अब क्वेश्चन आता है profitability और share price और whether मैं उसको सही प्राइस पे खरीद रहा हूँ या नहीं खरीद रहा हूँ. ठीक है. वेल पीपल हैव डाउट्स इन द माइंड. वो कहेंगे कि वाई यू आर कंपेयरिंग विद द निफ्टी 50 जो शेयर अभी सिर्फ 1 साल पहले ही लिस्ट हुआ है. वेल द रीज़न आई एम टेलिंग यू इज़ बिकॉज to those people, it is to those people who think that understanding business is very hard, so finding a right share is very hard. So it is my thought is that invest in Nifty 50. Nifty 50 के बहुत सारे ETFs exist करते हैं. अगर आप उसमें पैसा लगा दोगे तो they just grow by itself. Just to give you a simple a scenario, a sarcastic scenario, झुंझुनवाला ये कहता है कि आपके 4 साल में पैसा डबल होना चाहिए. Means you should get a return of at least 20 to 25% in a year. Okay, जो आपको FD RD कोई नहीं दे सकता, but you wanted very stable returns. Okay, so that means you have to find the best companies. Okay, let's do a 5 years growth chart जिसमें कोविड भी आया था, तो बहुत शार्प जो इम्पैक्ट रिसेशन का जो था वो आया था, वो भी इंक्लूड कर लें, विच हैपन बिटवीन फरवरी 2020 टिल टुडे. अभी तक जितना भी देख लेंगे, आज भी Nifty 50 is 112% from 2017. So what does that shows? That अगर किसी को दिमाग नहीं लगाना, he can just buy Nifty 50 and relax. Just keep on adding and don't worry about it. Okay, and then only think about your retirement. That's one thing. Well, let's talk about Burger King. Okay, that's one thing I want to show you here. Nifty 50 में अगर 100 रुपये लगाए होते 1 साल पहले तो आज 124 होते, और अगर बर्गर किंग में मैंने 1 साल पहले लगाए थे 100 रुपये तो आज उसकी वैल्यू अराउंड 82 रुपीज़ होती. सो इन द कंपैरिजन यू कैन एक्चुअली सी दैट that is a loss of around 40 rupees for 24, 34, 44. So around 43 rupees का difference है, gap है इन दोनों में. Okay, that's one thing. It's just giving you perspective. Okay. Well, the question comes is Burger King इतना मरा हुआ क्यों है? The reason is that there are certain reasons. Okay. Another reason is that Burger King ने recently अभी Indonesian business को buy करा है. Around 83% of the companies of Indonesian segment उन्होंने इसको take over कर लिया. Okay, so that's actually a good thing, but the question comes in my mind is that is it a good thing when you want to acquire a restaurant business when the market is at the lowest because of the COVID situation? It could be a greatest decision or it could be the worst decision. That all depends upon the future कि Burger King कैसा behave करता है. Okay, so let's get started and let's actually see what they have acquired and how much money they have spent to acquire it. Okay, ये December 15th 2021 की उनकी released थी announcement जिसमें उन्होंने कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया था. Okay, so dilution का मतलब ये होता है कि if the company has 10 shares listed, अब वो 10 को 12 कर रही है, that means 20% dilution. Just giving example here. Okay, now let's understand कि उन्होंने dilution कितनी करी. So if I just see the calculator here it is. पहले कंपनी के पास 50 करोड़ 50 लाख शेयर्स थे, which was increased to 60 crores. So if I just do a subtraction and try to see कि कितना हुआ था, 6000 minus 50. That means 950 lakhs, somewhere around, divided by 6000. So multiply by 100. मतलब कंपनी ने around 15.83 dilution करी to purchase the 83% of the Indonesian segment. Okay. अब क्वेश्चन आता है कि इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक शेयर डाइल्यूशन से पहले होता, आज उसकी जो वर्थ है वो 85% रह जाती, 0.85. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट टू. बट द क्वेश्चन कम्स इज दैट उन्होंने जब ये डाइल्यूशन करी तो उस चीज़ को जिस चीज़ को उन्होंने ख़रीदा उसकी हालत कैसी है. सो हियर इट इज़, आई एम शेयरिंग यू अ स्क्रीन. आई फाउंड इट फ्रॉम
बर्गर किंग डिलीवरी फ्रॉम इंडोनेशियन साइट, जहाँ पे उन्होंने 2020 और 2019 की डेटा को रिलीज़ किया था, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी. ओके, जस्ट कीप दैट इन अ माइंड कि 2019 2020 के टाइम पे भी कोविड हिट हुआ था, तो डेफिनेटली जो प्रॉफिटेबिलिटीज़ हैं वो बहुत हैम्पर कर सकती हैं. एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू शो हियर. उस टाइम पे लेट्स से 2019 में कंपनी का, दिस इज़ इन रुपया, ओके, दैट वन, देयर ओन करेंसी. सो उनका ग्रॉस प्रॉफिट अराउंड 820 था इन 2019, और 2020 में उनका ग्रॉस प्रॉफिट कम होकर 640 रह गया था, विच इज़ समवेयर अराउंड 20% डिक्रीज्ड. ओके, बट कीप वन थिंग इन माइंड कि भाई इस ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए उन्होंने जो एक्सपेंसेस किए थे, सेलिंग एक्सपेंसेस किए, जो विच इज़ नॉट इंक्लूसिव ऑफ एवरी एक्सपेंस, जस्ट अ सेलिंग एक्सपेंस, ओके, विच इज़ मोर देन द ग्रॉस प्रॉफिट. 820 के लिए 744 का सेलिंग एक्सपेंस हुआ, 640 के ग्रॉस प्रॉफिट को कमाने के लिए 720 का सेलिंग एक्सपेंस हुआ. ओके, विच इज़ हियर. Okay, which shows that ke how much pain the Indonesian segment is going to bring in the next quarter results of Burger King. Okay, and Omicron abhi India mein hit hua hai. If you see a cycle of a virus so far, it usually lasts for 3 weeks to 2.5 months. और वो first 3 weeks में market ने जितना correct होना होता है वो हो जाती है, and then it starts recovering. Okay, and that's what I'm trying to understand here, just a financial point of view, कि अभी इंडिया में हिट हो रहा है. It will last for 3 weeks or 4 weeks, depend, or a month or 2 months, depends upon how the government behaves. जिस तरह से लॉकडाउन्स लगाएगी, जिस तरह से वो करेगी. But I know that this time जो लॉकडाउन्स और जितने भी प्रिवेंशन मैकेनिज्म्स उन्होंने अप्लाई करने हैं वो उतने स्ट्रिंजेंट नहीं होंगे जितने वो पहले थे. Okay, but there is something we need to keep in mind is that maybe in next week or 2 weeks or so Indonesian segment को भी business hit होंगे, क्योंकि Omicron वहाँ पे भी आ रहा है. Okay, so the way I understand it is that company took a decision. I don't know whether the decision of that value of that worth of the decision was good or right or not, क्योंकि the Indonesian segment itself it's not showing a profitability aspect here. That's one thing in my mind. Okay, but it is as of today. इसका मतलब ये नहीं है कि कल नहीं होगा, कल परसों तरसों, या as the time passes by, the Burger King really needs to work on improving their profitability, their gross profit margin, their net profit margin, ताकि profitability दिखे. I also want to put this point and compare this Indonesian segment with Indian segment, okay, because that is also the same pain point which Indian segment has it. Okay, so I'm here in the trend line of Burger King, and you can see here PE ratios की नेगेटिव चल रही है, और ये नेगेटिव इसलिए चल रही है क्योंकि अभी तक इस कंपनी ने अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई नहीं है. अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाएगा तो उसकी PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, या प्रॉफिट वो नेगेटिव ही रहेगा. Okay, so here it is. Let's go into quarterly results and start comparing it. For a restaurant business, मेरे लिए main aspect आता है profit margin. I'm more targeting the gross profit margin. Net profit margin इतना बड़ा impact नहीं करता अगर कंपनी के पास कोई लोन्स नहीं है. अगर कंपनी के पास लोन है तो नेट प्रॉफिट मार्जिन मेरे लिए बहुत बड़ी, उसको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने टाइम पे जो उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट्स है या एक्स्ट्रा चीज़ें पे करनी है वो उस टाइम पे होती हैं. ओके, सो इफ़ यू सी कंपेयर इट विद सितंबर 2021 विद ऑल अदर्स, इट हैज़ बिन अ गुड क्वार्टर. बट मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे कोविड था. ओके, बट इफ़ यू कंपेयर इट विद 2019, इट इज़ वेरी सिमिलर. 230 करोड़ था 2019 में और 250 करोड़ था सितंबर 2021 में. इवन दो सितंबर 2021 में उन्होंने नंबर ऑफ स्टोर्स ज़्यादा खोल लिए थे. ओके, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, they have a target of in year 2026 that they have to open around 700 stores, and currently the store count is 265. Okay, so बेसिकली ज़्यादा स्टोर्स खोलने के बाद भी उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी तक इम्प्रूव नहीं हो रहा, एंड दैट इज़ व्हाट इन माय व्यू इज़ द प्रॉब्लम हियर.
कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव नहीं होगा तो आप प्रॉफिटेबिलिटी भूल जाओ, तभी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव में है। ठीक है, एक्चुअली जस्ट टू गिव यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपने बर्गर बनाया और आपने बर्गर बेच दिया, उस बर्गर बनाने के लिए जो डायरेक्टली जो कॉस्ट एसोसिएट थी, वो डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड थी, उसकी जो कॉस्टिंग है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जितनी वैल्यू आती है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें, लोन पेमेंट, सब चीज़ें निकालते हो। ठीक है, फॉर मी दैट इज़ नॉट अ केस। द रीज़न दैट इज़ नॉट अ केस इज़ बिकॉज if I do a peer comparison of Burger King, and this is my metrics, and if I compare Burger King with Jubilant or any others, उनके पास debt नहीं है, they don't have any debt, and that's a good part, but they really need to improve their profitability. So just to summarize what I have seen it, December 15, 2021 में कंपनी ने क्या कहते हैं, बर्गर किंग ने इंडोनेशियन सेगमेंट को खरीदा, which is already going to be a pain. Okay, next thing is that here it is, let's go here. December 15 के अंदर उन्होंने खरीदा, इंडोनेशियन सेगमेंट पे ऑलरेडी बिजनेस में प्रॉब्लम आने वाली है, मतलब आई मीन वी ऑलरेडी नो देयर इज अ प्रॉब्लम, द प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स इज नॉट एज कन्विंसिंग एज इट नीड्स टू बी, और ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट्स है इट विल कंज्यूम 3 weeks to 2 month साइकिल ऑफ एनी रेस्टोरेंट बिजनेस, यानी कि समझो तो मार्च में उनका क्वार्टर रिजल्ट आना है। ओके, देयर वुड बी अनदर कमिंग प्रॉब्ली नेक्स्ट 4 months और सो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बर्गर किंग के अंदर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होता है, दैट वुड बी अ टर्न अराउंड फॉर दिस बिजनेस। एंड सेकेंड थिंग दैट कम्स इन माई माइंड इज दैट ये अर्निंग्स क्वार्टर और नेक्स्ट अर्निंग्स क्वार्टर्स जो हैं ये इसके बहुत पेनफुल रहेंगे, एंड पीपल आर रियली गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू सी दैट वेदर दिस कंपनी इज टर्निंग अराउंड और नॉट। ओके, सो विद दैट पॉइंट इन माई माइंड, मैं अब आपको सिर्फ एक टेक्निकल व्यू दिखाना चाहता हूँ कि द टाइम व्हेन इट वाज लिस्टेड इट शूटेड अप टू 200 रुपीज़, उसके बाद से इट इज़ कीप ऑन लाइंग गोइंग डाउन एंड डाउन. And this, if you see this decline, this decline was a decline of COVID in India. Okay, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अभी कोविड शुरू हुआ है, इट विल गो फर्दर, मे बी टेक सपोर्ट और समथिंग. मैंने इसकी 3 या 4 सपोर्ट्स रखी हुई हैं जो पुरानी सपोर्ट्स के साथ मैच कर रही हैं, विच इज़ समवेयर अराउंड 137 रुपीज़, 131 रुपीज़ एंड 127 रुपीज़, जो उसके पुराने लोअर्स थे. ओके, देयर इज़ वन थिंग टू कीप इन अ माइंड. अगर उसने नेक्स्ट अर्निंग्स क्वार्टर में अगर जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं इंडोनेशियन सेगमेंट्स पे, अगर वो उसको अचीव नहीं कर पाती, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि येस दिस कैन गो फॉल फर्दर. ओके, और वट एवर इट इज़. बट देयर इज़ अ वन गुड थिंग इन दिस आस्पेक्ट इज़ दैट द कंपनी हैज़ नो डेट. ओके, और जो उन्होंने नई इंडोनेशियन सेगमेंट को ख़रीदा भी है, वो भी उन्होंने अपने शेयर्स को डाइल्यूट करके ख़रीदा. ओके, विच इज़ एक्चुअली गुड थिंग फॉर अ लॉन्ग सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, विद दैट इन माई माइंड, मुझे लगता है कि इस 2 क्वार्टर्स के बाद ये दिस शुड टर्न अराउंड. एंड ऑल्सो इफ़ यू गो हियर एंड ट्राई टू सी ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ बर्गर किंग बाय ऑल द big analysts. Okay, so if I go here, let's search for here, search for the stock name. Here we go. तो अगर बर्गर किंग की मैं रिपोर्ट्स देखूं, जो लोगों ने रिपोर्ट्स दी हैं, तो एक प्रभुदास ने रिसेंटली 12 नवंबर को अपना जो टारगेट है वो रिड्यूस किया. ओके, एंड द टारगेट इज़ रिड्यूस टू 242. If you see 145 or 242, that's a big difference. मतलब almost 60-70% की jump है. Okay, and all others who have done the analysis on it, their all targets are above 200, to 210, 250, 227. So if you see that people are positive on, then analysts are pretty positive on this stock. Okay, so with that point keeping in mind, and even if you see the target was downgraded, so when he upgraded, so it was upgraded from 250
to 240. So I mean downgraded from 250 to 242, which I think he's trying to categorize the Indonesian segment. Okay, I don't know whether Omicron was actually done or not. So with that keep in my mind, I want to end this video by stating that ये दो जो quarters हैं, that would be pretty painful for Burger King, but its long term horizon is profitable if the trend changes and the profitability matrix or gross profit improves in the Burger King. Okay, so with that I end it. Thank you for listening. If you have any questions or anything in your mind, please put your comments, like and subscribe to this channel. Thank you. Thanks a lot. Bye bye.